हेलो एवरीवन वेरी गुड इवनिंग। ताले आज आम सीटीईटी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी केतरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ताले फर्स्ट आम पेपर 1 डिस्कसन करवा। तापर एबे जेहेतु सीटीईटी नोटिफिकेशन आसी सारी तो एबे रेगुलर सीटीईटी क्लास हम। ताले फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रेन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। ताले को एज रे बा को स्टेज रे चिल्ड्रेन माने तांको पीयर ग्रुप रे एक्टिव मेंबर थांती। एक मिनट लेट मी क्लीन फर्स्ट। हाँ ताले को स्टेज रे देखो चिल्ड्रेन माने ना जे एडोलेसेंस टाइम रे चिल्ड्रेन माने तांको फ्रेंड ग्रुप रे एक्टिव मेंबर थांती। तापर क्वेश्चन डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ। ताले देखो डेवलपमेंट होची गोटे नेवर एंडिंग प्रोसेस बा निरवच्छिन्न भाव में चली थाए केबे सरे नाही। ये आइडियाटा कहा सहित एसोसिएटेड समस्ते ऑप्शन देखिकी तो जानी पारुथबो। ऑप्शन गुड़ा देखिले ही जना पड़ जाउथबो। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। तो देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस नेवर एंडिंग प्रोसेस माने कौन डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ताले एटा कहा सहित लिंक्ड डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन टॉय इज रेफर्स टू पिलामानकर को स्टेज को आम टॉय एज कही था जितेबाला से एर्ली चाइल्डहुड रे थांती आर्ली चाइल्डहुड से से एज को टॉय एज कह जाए कहीं से एज रे पिला माने खेलना धरी खेलिया भल पाती। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ली चाइल्डहुड। कोटा आर्ली चाइल्डहुड रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुह। प्री गैंग एज, इमिटेटिव, क्वेश्चनिंग एज, प्ले एज। यहाँ टिके भाविया भल क्वेश्चन टे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टे। तो ये जदि देखा से कहला कोटा आर्ली चाइल्डहुड रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुह। ताले आर्ली चाइल्डहुड रो कैरेक्टरिस्टिक नुह पचारची तो प्ले एज गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुह कहीं प्ले एज आसो लेट चाइल्डहुड रे। तापरे इन लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड द कन्वर्सन ऑफ व्हिच फिजिकल एंटिटीज रो। ताले लेट चाइल्डहुड रे पिला माने को माने मोर फिजिकल एंटिटी रो कन्वर्सन को बुझी पारंती। ताले देखो एठी हमर आउ दुटा ऑप्शन अछि टिके हाँ एबे समस्त को क्लियरली दिसुथबो। ताले देखो लेट चाइल्डहुड रे पिला माने मास नंबर एंड एरिया लेट चाइल्डहुड रे मास नंबर एंड एरिया ये सब फिजिकल एंटिटी रो कन्वर्सन को बुझी पारंती। ताले ऑप्शन डी होची राइट आंसर। सब बड़े क्लीन करिया पई टिके पड़िबो माने एटा जेहेतु बाय डिफॉल्ट से भली माने व्हाइट बोर्डटा तो ये हमको क्लीन करले ही आम नुआ किसी लिखिपर। ठीक अच्छे तापर क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। ताले डेवलपमेंट रो मीनिंग पचारछि डेवलपमेंट रो मीनिंग कौन। ताले बा डेवलपमेंट कौन डेवलपमेंट होछि प्रोग्रेसिव चेंजेस और सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन। ये देखो ये अच्छी मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस ये अच्छी मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। शुड माने हमको एटा टिके कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन तो यार आंसरटा जी लगुच यहाँ हम मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस बट यहीटा आमर आंसर किंतु यहीटा देछे। तो ये क्वेश्चनटा समस्ते निजे निजे भावतु जदि क्या पाखे किसी रेफरिंग मटेरियल अच्छी ताले रेफर करूँ। मत जी लगुच मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस ये लगुच कहीं आमर मैच्योरेशन भी डेवलपमेंट उपर इफेक्ट अच्छी।
बट जदि आम आंसर को देखा यहाँ गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेहेतु यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आरटीईटी आसी 2011 तो ये आंसर थिला प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। सो दीटा आंसर तो मुझे कहली मत जोटा ठीक लगुच मुझे कहली सहित जोटा आमर आंसर देती कहली। तेणु जो मैंने चाहूँगी निजे टिके रिसर्च करूँ समस्ते तो बीएड सीटे बीएड करेंगे तो निजे टिके रिसर्च कले आइडियाटा पाई जाए पारे। ताले ठीक अच्छे तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बाबद रे को स्टेटमेंटा करेक्ट नहीं। ठीक अच्छे फर्स्ट मत टिके क्लीन करिया को पड़िबो। हाँ को स्टेटमेंटा क्लिक कमर करेक्ट नहीं। Each phase of development has hazards. Development is not aided by stimulation. Development is affected by cultural changes. Each phase of development has characteristic behavior. ताले देखो कोटा करेक्ट नहीं कहूँ ताले आमको फर्स्ट आम देखीदा कोटा करेक्ट अच्छे। ताले सबू डेवलपमेंट फेज रे किछि ना किछि हाजार्ड्स थाए माने डिफिकल्टीज। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट आसूची डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन ना एटा तो ठीक ना डेवलपमेंट स्टिमुलेशन द्वारा इन्फ्लुएंस हुए तो एटा करेक्ट नहीं। ताले 7 रो आंसर हे जिवो बी। ओके मो टिके क्लीन करे ठीक अच्छे बी। ओके बेजिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन देछि। एटा होची हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम एटा जो डिस्कशन करूछंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कौन देछि 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टैक्स इज नॉट एप्रोप्रिएट टू लेट चाइल्डहुड। ताले लेट हमको जो चारिटा ऑप्शन देछि ए भितर कोटा लेट चाइल्डहुड पाई एप्रोप्रिएट नुह। लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, अचीविंग ए मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल, तापरे अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, लर्निंग टू गेट एलॉन्ग विथ एजमेट्स। तो यहाँ आमको चारिटा भितर गोटे बाछिया पड़ो जोटा लेट चाइल्डहुड सहित रिलेटेड नुह। लर्निंग फिजिकल स्किल नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम एटा ठीक अच्छे। अचीविंग ए मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सोशल रोल एटा ठीक नहीं। ओके अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस ठीक अच्छे। तो यहाँ पर्सनल इंडिपेंडेंस बोले मैंने अचीव करने चाहती। लर्निंग टू गेट एलॉन्ग विथ एजमेंट एटा मध्य ठीक अच्छे। यहाँ हम आमर राइट आंसर यहाँ करेक्ट नहीं। तापर क्वेश्चन द करेंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड एज्यूम्स दैट। तो चाइल्डहुड रो करेंट व्यूटा कौन एज्यूम करे। चिल्ड्रेन आर सिमिलर टू एडल्ट्स इन मेनी वेज। चिल्ड्रेन आर बेस्ट ट्रीटेड एज यंग एडल्ट। चाइल्डहुड इज बेसिकली वेटिंग पीरियड। Childhood is a unique period of growth and development. ताले द करेंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड कौन एज्यूम करुचे करेंट व्यू। तो यहाँ टिके क्वेश्चन टा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन टी माने हमर विभिन्न एंट्रांस रे आसे क्वेश्चन टी बारंबार। तेणु कौन हम यहाँ ना चाइल्डहुड गोटे यूनिक पीरियड कहार ना ग्रोथ एंड चेंज रो। ठीक अच्छे चाइल्डहुड इज ए यूनिक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। ओके एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। द बेस्ट गोटे द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ताले चाइल्ड रो ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करिया पाई कोटा बेस्ट मेथड। बहुत मेथड तो अच्छी कोटा बेस्ट मेथड। साइको एनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक अच्छे ताल देखो चाइल्ड रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करिया पाई डेवलपमेंटल मेथड इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ये चारिटा गोटे गोटे मेथड। ओके साइको एनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव, स्टैटिस्टिकल इज आल्सो मेथड बट बेस्ट जदि कह ताले डेवलपमेंटल मेथड। Which one of the following is the true statement corresponding to cephalocaudal principle of child's development? देखो ये कौन लिखा है सेफालोकोडाल।
सेफालोकोडालटा क्या इंडिकेट करुच्ची ना सेफालोकोडाल करुच्ची डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो पर्यंत करुचे हेड टू टो आ गोटे रहा प्रोक्सीडेस्माल सेटा कौन करुच्ची टो टू हेड ताले हेड टू टो पर्यंत कला ठीक अच्छे सॉरी हेड टू फुट हो पारे हेड टू टो हो पारे टर्म PSRN इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज ताले PSRN टर्मटा डेवलपमेंट रे तार माने तार फुल फॉर्म कौन तार माने कौन पाई माने तार स्टैंड करिछि तार माने कहा पाई कहार एटा एब्रिविएशन सेटा पचारुछ PSRN ताले देखो P for problems, PS for problem solving, R for reasoning and N for numeracy. ताले ऑप्शन A is the right answer. एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कौन देछि नेक्स्ट हला 13 नंबर क्वेश्चन क्लीन न कले तो किछि भी हम एठी लिखि पारिबानी सो आई हैव टू क्लीन फर्स्ट ओके Pneumonics is related to pneumonia, memory, anemia and amnesia. ताले pneumatics is related to कहा को related एटा होची हमर गोटे माने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ए क्वेश्चन टी बहुत कम जन को जानी थिबे मे बी भाबुची ताले एटा गोटे कहीं ना आमर ओस्टेट रे एई भली क्वेश्चन एते आसुनी आमे जदी पूर्वर ओस्टेट क्वेश्चन को देखिबा ओटीटी क्वेश्चन को देखिबा ताले एई भली क्वेश्चन एते आसुनी ओटीटी रे बेसिकली पेडागोजी पार्ट रो बेसी आसुची एंड हमर जो रहिला चाइल्ड साइकोलॉजी पेपर रु टिके कहया गले कंपेयर करले एई भली क्वेश्चन एते आसुनी किंतु सीटीटी रे आमर क्वेश्चन जो रहिबो क्वेश्चन टिके रहिबो टफ रहिबो तेनु सीटीटी पाई प्रिपरेशन जो माने करूछंती सेमान को केतेटा स्टैंडर्ड भलो बुक रु प्रिपेयर करिया पाई पड़िबो ओस्टेट ओटीटी पाई जदि आपण गाइड पढुछंती देन मै बी ठीक अछि एंड ओटीटी पाई स्टैटिस्टिकल पेपर जेमती हमरो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडम जेमती एज रु आसी जाउतला क्रोनोलॉजिकल एज मेंटल एज रु क्वेश्चन बहुत आसे सेमती आसी जिवो किंतु सीटीटी रो क्वेश्चन लेवल टिके रहिबो टफ रहिबो तो सीटीटी पाई समस्त को टिके भलो भाबरे प्रिपेयर करिया को पड़िबो ठीक अछि ताल देखो राइट आंसर कोन होबो राइट आंसर होबो मेमोरी ठीक अछि मेमोरी ओके एबे हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को हां स्टार्ट हला देखो द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टैक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ताले डेवलपमेंटल टैक्स रो कंसेप्ट फर्स्ट किए यूज करथिले ताले डेवलपमेंटल टैक्स रो कंसेप्ट फर्स्ट हैबिगस्ट यूज करथिले ठीक अछि ऑप्शन डी होची राइट आंसर तापरे डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरीली ए पार्ट ऑफ ताले कंसेप्ट डेवलपमेंट कहार गोटे पार्ट देखो देखो समस्या क्वेश्चन टी जानि परिबो इमोशनल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट ताले कंसेप्ट कथा आसुची इट इज ए मेंटल प्रोसेस सहित रिलेटेड ताले एटा होची इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो गोटे पार्ट हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर तो प्राइमरी सेकेंडरी डायनामिक स्टैटिक हेरिडिटी को हमें को टाइप रो सोशल स्ट्रक्चर बोली कही थांती ले हेरिडिटी होची गोटे स्टैटिक सोशल स्ट्रक्चर कहीं हेरिडिटी जहाँ हमरो वंशरू आसीची तो सेटा फिक्स्ड सेटा चेंज होबनी किंतु आमे जोटा एनवायरनमेंट होची कोन डायनामिक कहीं हमरो टाइम एनवायरनमेंट हमरो सब बेले चेंज होता है किंतु हेरिडिटी तो फिक्स्ड ताले हेरिडिटी को हमें फिक्स्ड कहबा ठीक अच्छे ताले ये आमर हेरिडिटी कंसीडर्ड एज ए ये आमर गला हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज ए सोशल स्ट्रक्चर ये हम कौन स्टैटिक स्टैटिक तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन human development is based on certain principle which of the following human development is based on certain principle which of the following is not the principle of human development continuity sequentiality general to specific reversible
ताल देख यहाँ हम ऑप्शन डी रिभर्सेबल। ठीक अच्छे रिभर्सेबल से कहला ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रिंसिपलटा आमर नुहे तो ये आंसर हम ऑप्शन डी रिभर्सेबल। तापर क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ताले देख ये आम जब देखा कहार जॉइंट प्रोडक्ट से पचार इज द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन समस्त जानते हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट रो जॉइंट प्रोडक्ट। तापर क्वेश्चन कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय विल पावर कंडक्ट एंड बिहेवियर मोरालिटी ऑल ऑफ दिस। ताले कैरेक्टर किपरि डेवलप करे विल पावर भी माने किसी अच्छी कंट्रीब्यूशन एंड कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑल्सो एंड मोरालिटी देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन देछि the part of brain which is induced by emotional stimuli। ताले ब्रेन रो को पार्टा इमोशनल स्टिमुली रेस्पॉन्स ग्रहण करे। फर्स्ट क्लीन करवा तापरे इमोशनल स्टिमुली। ताल देखो ये गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन ये क्वेश्चन टी बहुत इम्पोर्टाट आमर एग्जाम पाई यही टाइप रो क्वेश्चन पूरा कनसेप्चुअल क्वेश्चन आसे सीटीईटी रे। ताल देख यार राइट आंसर हम ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। ब्रेन रो कौन कौन पार्ट रही जानापी पड़ो तो कौ पार्ट इमोशनल स्टिमुली को आमर रेस्पॉन्स दिए तो तारटा है हाइपोथैलेमस। Which one of the following is not an internal factor on the growth and development of children? Biological factor, intelligence, emotional factor, environment in the womb of the mother। कोटा से कहला गोटे इंटरनल फैक्टर नुहे पचारि ताले देख एटा इंटेलिजेंस। ठीक अच्छे व्हिच इज वन इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर तो ये जब देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटेलिजेंस गोटे फैक्टर नुह ये आम जो एनवायरनमेंट मदर रूम रे हो कि इमोशनल हो बायोलॉजिकल गोटे गोटे फैक्टर बट इंटेलिजेंस इज ए ट्रेट व कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ए फैक्टर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी कहार रिजल्ट ह्यूमन पर्सनालिटी यहाँ भी समस्ते जानते इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी एक्सप्लेनेशन दरकार नहीं इजी क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कोटा डेवलपमेंट रो गोटे प्रिंसिपल डेवलपमेंट इज ऑलवेज लिनियर इट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड आ गोटे ऑप्शन ये देखो तले इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल कोटा डेवलपमेंट रो गोटे प्रिंसिपल डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस ये तो भूल अच्छी ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड ये मत भूल अच्छी तापरे इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल ताले ये आम जानते आम पढ़ी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हाँ ये लिनियर नुह ये भूल अच्छी ताले इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। Which of the following is predominantly heredity related factor? Participation in social activities, attitude towards peer group, thinking pattern, color of the eyes। कोटा predominantly heredity related factor। देखो हेरिडिटी रो कोटा इफेक्ट रे हुए पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज जदि आम सोशल एक्टिविटीज रे पार्टिसिपेशन कथा देखा तापर है एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप यहाँ आसूँ कौन एनवायरनमेंट फैक्टर ताले यहाँ नुह यहाँ भी एनवायरनमेंट थिंकिंग पैटर्न ये हूँ कौन गोटे आमर बायोलॉजिकल फैक्टर कि थिंकिंग पैटर्नटा यहाँ आसो जड़े भाविबा किपरि चिंता करुँची यहाँ तार गोटे आसो कौन गोटे कॉग्निटिव डोमेन को कवर कला जोटा कि आमर मे बी बायोलॉजिकल फैक्टर हो पारे किंबा तार एनवायरमेंटल फैक्टर हो पारे। ओके किंतु कलर ऑफ द आईज कौन ना यहाँ हूँ हेरिडिटी फैक्टर देखो बहुत जनकर आईज कलर ब्लू थाए माने आमर बलिया कलर कहीं जो आम चिल्ड्रे आखि कही जार फैमिली रे जदि बहुत जनकर रोथुब से टाइप्र ताले से थाए स्पेशली जदि माँ कि बापांकर कहार थी ताले पिला मानकर से भाया थाए। ओके एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन को
Environmental factors that shape development include all of the following except culture, quality of education, physics, quality of nutrition. এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ क्वेश्चन टी ସହଜ क्वेश्चन କିଛି ଏତେ डिफिकल्ट ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ କହିଲା କି ଏନଭାयରमेंटल फैक्टर्स दैट जोटा कि डेवलपमेंट को हमर इनक्लूड करूची कोटाको छाड़िकी ताले कल्चर रहिला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक अच्छे फिजिक्स रो सेमते आमे कहबा कि कुछ भी नाही ठीक अच्छे ताले ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस एडोलेसेंस माने कौन एक्सपीरियंस करी पारंती ताले देख फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन feeling of self satisfaction about life anxiety and concern about themselves feeling of fear about sins and cautions committed in childhood ठीक है ताले ए क्वेश्चन आमे जते बारे ओस्टेट पई एडोलेसेंस पढ़ी देले सेते बारे डिटेल ले पढ़ी देले तार थ्योरी ताले एडोलेसेंस कौन माने एक्सपीरियंस करि पारे एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which one of the following is an example of a fine motor skill? कोटा गोटे fine motor skill लो example climbing, hopping, running, writing कोटा fine motor skill लो example ताले writing is the example writing रे हमें हाथ तो करूछंती तो it is the example of fine motor skill। तापरे तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी systematic presentation of concept may be related with which of the following principle of development systematic presentation of concept आमे जोथरे हमरो concept को systematically present करी थांती development proceeds from heteronomy to autonomy student developed at different rate development is relatively orderly then development leads to growth कोट हबो ताल देखो हमें जदि देखा यार आंसर हम डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली डेवलपमेंट फॉलोज द ऑर्डरली पैटर्न आम पढ़ी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट रे तापर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड कज लर्निंग डिसेबिलिटी कौन लर्निंग डिसेबिलिटी क्रिएट करी पारे ओके तो देख कौन लर्निंग डिसेबिलिटी क्रिएट करी पारे cultural variation prenatal drug use aptitude of teacher and apathy shown by peers ହେଲା लर्निंग डिसेबिलिटी कही ना तो देख यहाँ टी माने आमको सब आंसर गुड़ा तो लगे सेम किंतु लर्निंग डिसऑर्डर हूँ माने यहाँ आमर कौन हो पारे यहाँ जोटा कि भितर जोटा पिलाटार हम जमी आम पढ़ी जमी लर्निंग डिसऑर्डर कौन कौन सब जानी जमी डिस्लेसिया डिस्ग्राफिया सब सब जमी पढ़ी तो से भाया जदि आम देखा ताले ये हम प्रीनाटाल ड्रग यूज प्रीनाटाल ड्रग यूज यार इफेक्ट रही लर्निंग डिसऑर्डर रे जोटा कि पिलाटार कंसंट्रेशन को शिफ्ट कर तार गोटे टर्म रही AHDP कि कौन एमती गोटे टर्म तो माने कौन हम पिलाटार कंसंट्रेशन शिफ्ट हम सी को भी टॉपिक रे कंसंट्रेट करि परिबनी लर्निंग डिसऑर्डर देखादेव से किसी जिनस माने पढ़ा गोटे आग्रह जो भीतर क्रिएट हुए तार से सबुरे टिके प्रोब्लेम आसो ताले एटा हम प्रीनाटाल ड्रग यूज ठीक अच्छे ताले ये आमर फास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीट समस्ते निश्चित भिडियोटी को भल भाव देखूँ ता सहित जो मैंने आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना से मैंने एबे ही सब्सक्राइब करनी जहाँद्वारा कौन हम ना रेगुलर इंपोर्टाट भिडियो अपडेट पाइपर एवं सीटीईटी एग्जाम भल भाव में प्रिपेयर करेंगे ता सहित आम चैनल ओस्टेट ओटीईटी एवं आरएसटी सबुपाई इंपोर्टाट भिडियो अपलोड होची तो समस्ते जदि सब्सक्राइब करनी निश्चित बेनिफिशियल रहा आज क्लास को रखा नेक्स्ट वीडियो पुणी आमर काली अपलोड हम थैंक यू।